Assalamu alaikum. So the topic that we are going to study today is the valency. That how can we know the formula of a compound by using its valency. So before knowing that, we should have a prior knowledge about what valency is. The valency of an element is the number of electrons its atom lose, gain और शेयर टू फॉर्म अ कंपाउंड. यानी इसका मतलब क्या है कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टेबल होने के लिए, या एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा स्टेबल होने के लिए, या एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा स्टेबल होने के लिए. दैट इज नोन एज वैलेंसी. लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम. द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. That means sodium has 11 electrons. So अगर हम इसके शेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो दैट मीन्स पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पीछे 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया. सो अगर सोडियम अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि दैट मीन्स कि सोडियम की वैलेंसी जो है दैट इज 1. फर्स्ट थिंग. इसी तरह से हम लोग बात करते हैं क्लोरीन की. अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग ये देखें तो पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, दूसरे शेल में 8 आ जाते हैं, तो लास्ट में हमारे पास 7 बच गए, तो लास्ट में 7 चले जाते हैं. सो हमें ये पता है कि एक एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए या एक मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए उसका आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट होना बहुत ज़रूरी है. ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. ना ही इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. इसी तरह से अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर जाएगा तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो होता बेसिकली क्या है कि सोडियम और क्लोरीन जो है, ये एक मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है और सोडियम भी स्टेबल हो जाती है और क्लोरीन भी स्टेबल हो जाती है. अब हम बात करते हैं वैलेंसी की. तो जो सोडियम है उसकी वैलेंसी 1 है. इसी तरह से क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है. जिस तरह हम लोग को स्कूल्स में अक्सर ये बात पढ़ाई जाती है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है. दैट मीन्स कि जो ले रहा है दैट इज नेगेटिव और जो दे रहा है वो पॉजिटिव है. ठीक है, सो सोडियम की अगर हम लोग बात करें तो ये दे रहा है, दैट मीन्स दिस वुड बी पॉजिटिव. सोडियम मेटल है, मेटल्स आर पॉजिटिव. क्लोरीन की बात करें तो ये ले रहा है, सो क्लोरीन वुड बी नेगेटिव. क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स कैरीज अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट. ठीक है, सो दैट मीन्स द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1 एंड द क्लोरीन इज 1, बट द वैलेंसी ऑफ सोडियम is +1 and the valency of chlorine is -1. That means when it will lose one of its electron, it will gain a stable configuration, and similarly when chlorine will gain 1 electron, it will become stable. Now if we look at this table, we can see that the elements that belongs to group 1 will lose 1 electron. As a result, their valency would be 1. Similarly, if you see the group number 2, it's written that the elements of group 2 will lose 2 electrons in order to become stable. So the valency of those elements would be 2. In group 3, we can see that it will lose 3 electrons in order to become stable, so their valency would be 3. So now if you'll see the elements in group 5, they can gain or share 3 electrons in order to become stable, so their valency is 3, vice versa. There are also different examples written in front of these groups that you can practice on, and let me know if you have any problem in that. For example, in group 1, as you can see, they have given the example of sodium chloride, and we have also worked that example out. So let me know if you have any other problem regarding this topic. Now moving further. Okay. Now, as we have to write the formula of a compound using the valency, so we have some rules.
that we need to follow if we have to write the formula of a compound keeping the valency in consideration. Number one, you have to write down the valencies of the elements present in the compound. Okay, so the first rule is you have to write down the valencies of the elements present in the compound. Okay, then the second thing, you have to write down the symbol of all those elements. Okay, and the third thing is you have to add numbers accordingly in order to balance it. एक एग्जाम्पल करते हैं. Let's suppose I have been given a question that what is the formula of hydrogen sulfide. Now I have to find the formula of hydrogen sulfide. Now if I look at the periodic table, I will see that hydrogen belongs to group 1 of the periodic table. That means what would be the valency of hydrogen? Its valency would be 1. Obviously, it needs 1 electron to be stable, so the valency of hydrogen would be 1. On the other hand, when I talk about sulfide, that means sulfur. You know how did we name it hydrogen sulfide? I'll also link that video in the description box down below if you do not know how to name a compound. So if we talk about sulfide belongs to group 6 of the periodic table. That means it needs how many electrons to become a stable molecule? It needs 2 electrons. So that means that sulfide will be stable if it will gain 2 electron, and hydrogen will be stable if it will gain 1 electron. So that's the valency. So we are done with our step number 1, that is we have written the valencies of the element. Now step number 2 was to write the symbols. I have also written symbol of hydrogen and sulfide. Now we are going to match it. How? Let's see. Okay, if I talk about hydrogen needs 1 electron to stabilize itself and sulfur need 2 electron. So the simple formula that I can make is HS. But if I talk about this formula, hydrogen has gained 1 electron. But what about sulfur? Okay, hydrogen has gained 1 electron, but sulfur needs 2 electron to be stable. So in that situation, what are we going to do? Hydrogen has only shared 1 of its electron. So that means if we have 2 hydrogens and 1 sulfur, then it would be a stable form. How? Because sulfur needed 2 to become stable and hydrogen needed 1 to become stable. So 1 hydrogen cannot stabilize sulfur. एक हाइड्रोजन सल्फर को स्टेबल नहीं कर सकता क्योंकि सल्फर को 2 चाहिए. तो सल्फर को 2 देने के लिए हमने क्या किया है कि हमने हाइड्रोजन ही 2 ले लिए. ठीक है, तो दैट मीन्स एक हाइड्रोजन की तरफ से और दूसरी हाइड्रोजन की तरफ से. So this would be the formula of hydrogen sulfide. Okay, now moving towards another example, let's say I have aluminium oxide. So moving towards the valency of aluminium is 3 plus 3 because it belongs to group 3, and the valency of oxide is minus 2 because it belongs to group 6. That means it needs 2 electrons to become stable, and aluminium needs to lose 3 electrons to become stable. Now the symbols, aluminium stands for Al and oxide stands for O. We know that 1 oxygen needs 2 electrons to be stable, but 1 aluminium has to give 3 electrons to oxygen in order to become stable. So 1 aluminium cannot give 3 electrons to 1 oxygen. अब ऑक्सीजन को तो सिर्फ 2 चाहिए ना, तो एक एल्यूमिनियम 3 तो ऑक्सीजन को नहीं दे सकती. लेकिन हाँ, अगर एल्यूमिनियम हमारे पास 2 हो और ऑक्सीजन हमारे पास 3 हो, तो फिर ये एक स्टेबल मैच हो सकता है. क्यों? क्योंकि इस केस में एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन देगी और ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लेगी. सो द फॉर्मूला वुड बी Al2O3.
सो वी हैव टू राइट द फॉर्मूला विच इज द परफेक्ट मैच, जहां पर दोनों की वैलेंसीज कैंसल आउट हो रही हों और सेटिस्फाई हो रही हों. दैट इज योर राइट फॉर्मूला. नाउ इफ you have any other query or if you want to know answer for any other question, you can write that down in the comment section below.